busy streets of Saddar. Take a turn into a tiny gully tucked between Empress Market and St. Joseph's College, and you will find a small bakery with a big history. Misquita Bakery was first set up by a Christian named Joseph C. Misquita on Daud Pota Road. After Joseph's death, his wife took over the bakery and managed it for some time. When she was not able to keep up with the demand for the bakery, one of their employees stepped up and offered to buy the bakery and run it. मेरे डैडी इसके पास यहाँ पे जॉब करते थे, इनके पास मिस्कीटा के पास, और उसके बाद वो वहीं काम करते थे। फिर उसके बाद 73 में आई थिंक सो ये बेकरी बंद हो गई थी। एक साल ये बेकरी बंद रही थी। फिर उसके बाद मेरे डैडी ने जो है उनसे ये बेकरी ओन की थी। His son, Syed Haider Abbas Zaidi, can be seen overseeing the baking of the rich plum cakes with raisins and spices of cinnamon powder. It's the busiest time of the year for Misquita Bakery. During the Easter and Christmas week, customers run in and out collecting their cakes and Christmas goodies. इसकी मेकिंग जो है हम लोग 5 दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं और 16 to 17 तक हम इसको कंप्लीट करके हम स्टॉक में हमारे पास आ जाओ, फिर हमारी सेल काउंटर सेल स्टार्ट हो जाती है। Did you know they also allow their Christian customers the use of their ovens? Customers stand with their ready-to-bake ingredients outside the oven. But it's not just the Christian customers. Misquita has loyal, dedicated clients who come in all year asking for their delicious treats. क्रिश्चियन फैमिलीज तो बहुत कम होती जा रही, माइग्रेट कर रहे हैं ज़्यादातर, और वो फैमिली टू फैमिली चलते आ रहे हैं। उनकी भी सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है, हमारी भी सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है, तो अटैचमेंट वैसा ही है। उसी तरीके से वो भी आ रहे हैं और हम भी उनकी खिदमत कर रहे हैं। आउट ऑफ सिटी हमारे पास फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं कि आप इसको डिलीवर कर दें TCS से, या जैसे पेशावर से भी कॉल्स आती हैं, मुल्तान से आती है, हमें इस्लामाबाद से आती है। 4 तक हमारे पास मैक्सिमम आइटम्स जो है हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसमें हमें मतलब ये कह लें कि इस एक तरह से ऐसा होता है कि हमें लगता है कि क्वांटिटी बहुत कम थी। कभी 23rd की इवनिंग में, कभी 24th की मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है। 25th हमारा ऐसा होता है कि खाली भी जाता है कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें स्टॉक करनी पड़ती है, हैंड टू हैंड नहीं बन सकती।